सो जैसे कि अभी लैपटॉप का वेबकैम चालू हो चुका है प्रोग्राम रन होने के बाद। सो अभी मैं कैमरा के सामने जाऊँगा। Hey bro, someone is outside the door. Should I open the door? Yes, open it up. The door is unlocked, bro. दैट्स हाउ डोर अनलॉक हो गया। अभी लॉक भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो ऐसे ये लॉक भी हो जाता है The मतलब। door is locked again. तो बेसिकली ये अपने हिसाब से आप डिले डाल सकते हो इसके अंदर। फिलहाल इसके अंदर कुछ इसके जो डेटा सेट है उसके अंदर अभी कुछ नहीं है अभी। तो अभी मैं इसको मेरा फेस दिखाऊंगा ठीक से और बताऊंगा कि मुझे मेरा फेस जो है उसको स्टोर करके रखने को, मतलब रिमेंबर करके रखने को। ओके, रिमेंबर मी। Please speak your name. आई एम सोहम। Thank you, Saham. I will remember you. सो अभी जो मेरा फेस है इसमें अभी मैंने रियल टाइम में स्टोर करवाया है। तो अभी ये सिस्टम मुझे पहचान चुका है। तो अगर अभी मैं कैमरा के सामने आता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। सो लेट्स सी। Someone is outside the door. I am opening the door. सी गाइस, जो डोर लॉक है ऑटोमेटिकली ओपन हो गया और मेरा जो नाम है उस वो भी इसने बोला है। सो दिस आर कैमरा मॉड्यूल दैट इज माउंटेड आउटसाइड द डोर। सो हियर आई एम यूजिंग अ फोन एज अ वेब कैम। So this phone wirelessly connected with my PC and laptop. So this thing stream the outside scenario. Hey bro, someone is outside the door. Should I open the door? Yes, open it up. The door is unlocked, bro. So मेरा सिस्टर अभी डोर के बाहर खड़ा हुआ है। तो अभी मैं इसको मतलब ये डिटेक्ट जब करेगा देन उसको बोलूँगा कि उसको रिमेंबर करके रखने को। So, I open the door. remember her. Please speak your name. She is my sister. Thank you, sister. I will remember you. Sister is outside the door. I am opening the door. So जैसे कि अभी कोई परमिशन नहीं मांगा, डायरेक्टली डोर ओपन हो गया। It comes to the hardware part. So this is our Arduino Nano with an external voltage regulator. So this thing makes more outlet for 5 volt output. And this is MG90 is servo motor. Okay. So you can use SG90 also. So this thing comes with metal gears. So this motor gives more stability. Also it can handle a lot more torque and load. Okay. So this yellow thing is push or pull rod, whatever you say. And this is our door lock mechanism. Here is a rod. It goes outside this and goes inside this. Okay. So how it will work now, this mechanism is on unlocking condition. Okay, so the unlocking condition is when is the motor is on 45 degree, then this thing goes inside this and it will now in the unlocking stage. Okay, now I will manually move this toward 180 degree with my fingers like this. Okay, now it is on 180 degree position, so this thing goes outside. Okay, so this push rod pull this upward and this thing goes outside. Now when it is again on 45 degree, the push rod will pull down this and this things goes inside this. Okay, so this is how the door lock will lock and unlock the door. Okay.